Bonjour et bienvenue à French learning classes. So, as you learned about the days of the week, les jours de la semaine, okay? Week name, weekdays name. So, today we will learn about the months of the year, okay? Months of the year. There are 12 months of the year from January to December. Okay, so les mois de l'année, les mois de l'année, the months of the year. So let's get started. First is Janvier, Janvier, Février, Février, Mars, Mars, Avril, Avril, Mai, Mai, Juin, Juin, Juillet, Juillet, Août, Août, Septembre, Septembre, Octobre, Octobre, Novembre, Novembre et Décembre, Décembre. So these are the 12 months of the year names, okay, from January to December. On répète encore fois. Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, December. Okay, so concentration on the pronunciation is very important. Okay, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए बिकॉज इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी डिफरेंस है. अदरवाइज दीज आर द सिमिलर टू द इंग्लिश. ओके, जैसे इंग्लिश में नेम्स होते हैं मंथ के, वैसे ही फ्रेंच में भी हैं, 12 ही हैं, बट इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है. सो लेट्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर. सो हियर लेट्स डू द एक्सरसाइज विद मी ऑफ मंथ्स नेम. ओके, सो यहाँ पर क्या है, जैसे आपको 12 मंथ्स दिए होंगे, उसमें से कुछ कुछ आपको बताना है कि कौन सा किसके बाद आता है. ओके, व्हाट कम्स आफ्टर दी वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज janvier, avril, septembre et décembre. Okay, so what comes after the janvier? Then what comes after the avril? And what comes after the septembre? And what comes after the décembre? So tell me, let's think and tell me what comes after the janvier. Is Février. Okay, let's जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो Février, janvier, then Février. Avril. So what comes after the Avril is May. Avril is April and May. Then Septembre. Septembre. What comes after the Septembre? That means September is October, and October is called in French Octobre. So pronunciation का रेफरेंस है, एंड लास्ट में इसके RE लगता है. इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में ER की जगह RE लगता है. ठीक है, ऑपोजिट. सो एंड लास्ट वन इज Décembre. Décembre. After Décembre, what comes next? Again Janvier. Okay, दिसंबर के बाद अगेन जनवरी आता है ना नेक्स्ट. सो Décembre, then Janvier. So let's repeat one more and last time.
Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, December. Okay, so these are your months of the year. You should practice this again and again with the pronunciation, and this topic is end here, and we will meet in the next video with new topic. Till then, au revoir, à bientôt.